Okay, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all well and your preparation for the exams is going well too. So there were these two papers that were left, October, November 2022, paper 1-2 and paper 1-1. I'm sorry for doing it really late, but I thought ye do reh gaye the, to inko bhi hum kar lete hain complete. And then if you want to have a look at any particular question later on, you can have a look at that. It's okay. It's time. It's pretty normal to panic. It's okay. थोड़ा relax करें. Don't think too much. अपने notes एक दफा revise करें. You'll do well inshallah. So आपकी ज़्यादातर तैयारी अब तक हो चुकी होगी. इस time पे बस आपने consolidate करना है सब कुछ जो आपने कर लिया है. Have a look at the notes in detail again to make sure you're not missing anything. और अपने जो आपने already questions solve किए हुए हैं उनको एक दफा देख लें. And you should be good to go, inshallah. Before we start, just a reminder that you can find in the description a lot of other helpful materials. आपको quick revision videos यहाँ पे नीचे उसका link मिलेगा. That's the most important right now. उस पे एक P1 की checklist है. That 23 minutes की video है. उसमें आपको at least ये पता चलेगा कि आपने वो सारी चीजें जो है वो एक तरह से check box आपके टिक हो जाएंगे. आपने ये चीजें सारी cover कर ली हैं कि नहीं कर ली. Have a look at that. और फिर हर topic की जो है वो एक quick revision video है. If there's any particular topic that you want to quickly revise, you can have a look at that as well. And there's a lot of other helpful material there as well. If you want solution to any other yearly past paper, किसी past paper का कोई particular question आपको तंग करे, if that's between 2021 and 2023, आपको वो उसमें मिल जाएगा. You can have a look at that video और वो particular question जाके आप देख सकते हैं. Now let's start with this. Sara, yes, that's perfectly okay. You can do that. You can work in columns. आप space जिस तरह भी organize करना चाहे आप कर सकते हैं. उसमें कोई मसला नहीं है. Well, there's nothing like that. Exam कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि examiner नहीं allow करता है इसको. You can do that. Okay. Daniel, I'll be doing that next. इसके फौरन बाद I'll do that. So maybe you can have a look at that later. जब वो वीडियो हो जाए उसमें से आपको अगर वो एक particular question देखना है सिर्फ तो आप उसके बाद देख सकते हो. ठीक है. So I'll be doing these papers one after the other. 1-3 मैंने कर लिया हुआ है इस session का. I'll be doing 1-2 right now, and then after this I'll be starting with 1-1 as well. Okay, so you don't necessarily have to attend this live. It's your choice. आप ये कर सकते हैं. When I'm done with this, I'm just solving it. I'll be going through the more difficult questions in particular, and then what you can do is maybe later, जब आपको time मिले थोड़ा सा, if you want to have a look at any particular question, you can have a look at that. Use your time wisely. If you think that there's another important thing you should be doing right now, then probably it's better to do that right now. Okay, notes revise करना is the most important thing right now. और वो सारी चीजें जो एक दफा से remind करना, एक दफा से revise करना कि आपको सारी details हर topic की आपके ज़हन में बैठ जाएं. आपके हर paper के end पे लिखें. इस paper के end पे भी, let me just show that to you. You have one additional page here. और इसके बाद फिर अक्सर कोई ना कोई एक ब्लैंक पेज भी होता है. सो नॉर्मली एक पेज तो मिनिमम होता है और एक उसके अलावा और भी होता है. तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा पेजेस नॉर्मली होते हैं, एंड दैट्स नॉर्मली एनफ स्पेस. आपको और चाहिए नहीं होता. ठीक है. तो जरूरत पड़ती नहीं है. इट्स एक्सट्रीमली रेयर कि आपको उसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा जो है वो इसकी जरूरत पड़े. ठीक है. हमारा M1 बच्चे कल के बाद जब paper 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद. ठीक है. अच्छा चलिए, let's start with this then. So let's start with this paper. I'll be focusing on the relatively more difficult questions. I'm not going to do the complete paper. I think it's not going to be very efficient at this point as well to do the easier questions as well. I hope you can do all of them. But I'll be focusing on the ones that are relatively more difficult. Okay. Chale, let's start with this. Question number 1. You have to find the equation of the perpendicular bisector. 2 points दिए हुए हैं, उनमें equation of perpendicular bisector निकालनी है, midpoint निकालें, इनका gradient निकालें, उसका negative reciprocal ले लें, आपके पास perpendicular gradient आ जाएगा. You can write down that equation. That's not going to be difficult. Okay. Equation of circle with center A that passes through B.
सेंटर पता है, रेडियस आप निकाल सकते हैं। अगर सेंटर ए है और बी सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है तो ए भी रेडियस होएगा, तो आप रेडियस पे निकाल लेंगे, सेंटर भी होगा, आप सर्कल की फॉर्म में डाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा। The first question is pretty straightforward. Let's move on. Let's have a look at this one. Question number 2 says the first, second, and third terms of an AP are a, 2a, and a square respectively, where a is a positive constant. We need to find the sum of the first 50 terms of the progression. Now, how can we deal with this question? So we have an AP. AP क्या होती है? जिसमें consecutive terms का difference same होता है, right? तो इसमें you have the first term, that's a, the second term is 2a, and the third term is a squared. One way of doing this would be, आप कह सकते हैं कि अच्छा जो first two terms है इनका difference भी वही होएगा, और जो second और third terms है इनका difference भी वो होएगा. So you can say difference could be t2 minus t1, or difference could also be t3 minus t2. इससे आपके पास एक directly equation आ सकती है, which turns out to be 2a minus a, that's t2 minus t1, second term minus the first term, that is equal to the third term, which is a square minus the second term, that's a square minus 2a. यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक equation आ गई, right? It's a quadratic equation. Now this is going to be a squared. This is going to be a goes to the other side, it becomes a square minus 3a equals 0. And from this, what you can do now is you can find the value for a that satisfies this equation, right? So you can take a common. If you take a common, you're left with a into 1 minus 3 inside. A into a minus 3 inside. Now that means a could either be 0 or a could be equal to 3. But whenever you get multiple results, you have to see अगर क्वेश्चन के अंदर कोई उसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से आपको एक आंसर इग्नोर करना पड़ सकता है. सो आप यहाँ पे देखें, a is a positive constant, उसने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 0 तो नहीं हो सकता. This is not possible. Alright, so you'll have to ignore this result. This is not possible. आपके पास a की वैल्यू आ गई, ये क्या है, a equals 3, right? So when you know a equals 3, तो आप आराम से वो लिख सकते हो. आपका जो सीक्वेंस होएगा AP क्या बन जाएगा, it was a, 2a and a square. If you input a equals 3 there, आपके पास क्या आता है, 3, 6 and 9, right? So this is what the AP looks like. That means the first term is 3 and the difference is going to be 6 minus 3, that's 3. आप क्या करोगे, आपको sum of the first 50 terms चाहिए. Just input values in the sum formula for an AP. Sum formula for an AP formula sheet में लिखा होता है, right? ये Amar, you do get formula sheet, of course. Formula sheet आपके पास होती है. So ये formula sheet में लिखा होगा formula half n into 2a plus n minus 1 times the difference. All you have to do is just input values in this formula and you get the result. n की value यहाँ पे 50 है, 50 डाल दें और आपके पास a और d है. What do you get from that? Half into 50 into 2 into 3 plus n minus 1, which means 50 minus 1, which is 49, times the difference is 3. You can evaluate this and you get the result. ठीक है, इससे आपके पास sum आ जाएगा. Let me just see what this turns out to be very quickly, and then we move on. Okay, 25 into 6 plus 49 into 3, and that's giving me 3825, and that should be the result. That's the answer that we have. Okay, this is the sum of the 50 terms. That's what you have to figure out here. Not that difficult. Let's move on. Question number 3. You have to find the set of values of k for which this equation has no real roots. All you have to do is find b square minus 4ac, put that less than 0. No real roots का मतलब है discriminant should be negative, right? तो अब वो इनपुट करेंगे, एक quadratic inequality आएगी आपके पास, वो quadratic inequality solve कर लेंगे, you'll get the result. ठीक है, you can try this. This is not that complicated. You should know how to solve quadratic inequalities. वो बस आपने इसमें input कर देना, वो आपने बस method apply कर देना. ठीक है. Part B is also straightforward. It's a quadratic equation, and cos इसमें आप substitution use कर लें और substitution use करके quadratic equation solve करेंगे, cos की values figure out करें. ठीक है. You can do that. Let's have a look at question number 4. It says a GP is such that the third term is 1764, and and the sum of the second and the third terms is 3444. This is what you're given. Okay,
Now, what we need to find is the 50th term. Okay, it's a geometric progression. It's a geometric progression. आपको क्या क्या दिया हुआ है? Third term दिया हुआ है. That means it's a GP. Let's write that down here. T3 is given to be 1764, and we also know कि second or third terms का sum क्या है? Second or third terms का sum क्या है? Hamza, अगर आपने notes सारे revise नहीं किए, it's better to revise your notes right now. Do that, and then in this particular paper, अगर आपको कोई किसी question में issue था, तो आप बाद में आके देख सकते हैं. It's not necessary to be attending it live right now. Paper खुद से करना भी, it's not a good idea right now. What you can do is have a look at the papers, the recent papers that you haven't done yet. अगर आपने 2022, 2021 के कुछ papers नहीं किए हुए, at least आपको इतना करना चाहिए कि आप वो पेपर्स देखें, उनको गो थ्रू करें और अपने दिमाग में सोच लें कि अच्छा ये क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज रीसेंट पेपर्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ना उनका पैटर्न उसी तरह से बार बार आपके उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम. 2020 से ऑनवर्ड जो सारे पेपर्स हैं आपने या तो किए होने चाहिए, अगर नहीं किए आपने सारे तो एटलीस्ट उनको आपने देख लेना है. अब जो स्टेज है आप एक दफा 2-3 घंटे भी लगा के एक दफा वो सारे क्वेश्चंस देख लें. हैव think about them in your head कि अच्छा ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक दफा रिव्यू कर लें. ओके, अच्छा, anyway, let's get back to this. GP is T3 equals 1764, and we're given that this sum of the second and third terms is 3444. Okay, अच्छा, अब GP में आपके पास क्या information होती है? आपके पास formulas क्या होते हैं? You have the term formula, that is AR raised to power n minus 1. That's the term formula for a GP, and we have the sum formula for the GP, that is A into 1 minus R raised to power n divided by 1 minus R. Now, there are multiple ways of thinking about this. One way could be, आप देखें, term 1 को हम क्या कहते होते हैं? AP और GP दोनों के अंदर term 1 को हम A से represent करते हैं, right? अगर term 1 A है, what about term 2? अगर आप इस term formula में input करें, what should that turn out to be? N की value 2 input करें, N की value इसमें 2 input करें, what does that give you? That gives you AR raised to power 2 minus 1, which is AR. So second term is AR. और third term पे क्या होनी चाहिए? Third term होनी चाहिए AR squared. These are the three terms that are important in this case. First is A, second is AR, and the third is AR squared. Now, what information do you have? You are given that the third term is 1764. So what you can do using that is you can say AR squared, this thing, that should be equal to 1764, and that gives you one equation. Okay, and the second piece of information that you're given is that the sum of the second and third terms is 3444. So what you can do for that is you can say AR plus AR squared, that means the sum of these two terms, the second and the third terms, that should equal 3444, right? इससे आपके पास दो equations आ गई. आपको simply क्या करना है, इनको simultaneously solve कर लेना है, and you'll get your result. Okay, now how do you do that? आपके पास A और R की values आएंगी इससे, फिर आपको 50th term find करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Term formula apply करना पड़ेगा. Now let's solve these two equations and see what we get from them. So one idea is that you make A the subject in both of them. If you make A the subject in the first equation, that's going to give you A 1764 divided by R squared. What about the second equation? इसमें से अगर आप A common ले लें, that leaves you with A into R plus R squared, that equals 3444. ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा A equals 3444 divided by R plus R squared. A इनके इक्वल है, आप क्या कर सकते हैं? आप इन दोनों को इक्वेट कर दें, आपके पास क्या आएगा? 1764 divided by R squared, that is equal to 3444 divided by R squared plus, no, there's something wrong here. One was just R, the other was R squared. Okay, ये आपने equate कर दिया.
ठीक है. Now if you cross multiply, that is going to give you 1764r plus 1764r squared. This r square goes to the other side, and that leaves you with 344r squared on this side. Take all terms to one side. 1764 उस side पे जाएगा तो वहाँ पे subtract होएगा. Okay, I'm sorry about that. What happened there? Yeah. 1764 उस side पे जाएगा. 3444 minus 1764. That is going to give you 1680. 1680 r squared. और ये r भी वहाँ ये वाली term भी उधर ले जाए. That gives you 1764 r. उसमें से subtract हो रहा होगा. इसमें से अब क्या कर सकते हैं, हम r को कॉमन ले सकते हैं. r कॉमन लें और उससे देखते हैं आपको क्या मिलता है. 1680r minus 1764, that equals 0. Now this leaves us with either r equal to 0 or 1680r minus 1764 equal to 0. अब r की वैल्यू का 0 हो सकती है. अगर r की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है रेशियो 0 है, तो एक टर्म से नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए आपको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज जस्ट गोइंग टू मेक एवरी टर्म 0. तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता कि थर्ड टर्म 1764 हो जाए. अगर रेशियो 0 है, फिर तो सारी टर्म्स आगे 0 हो जाएंगे फर्स्ट टर्म के अलावा, राइट? सो रेशियो 0 पॉसिबल नहीं है. ओके, जनरली आप जो भी सीक्वेंस देखेंगे उसमें रेशियो 0 नहीं आ रही होती, और एपी के अंदर डिफरेंस 1 नहीं आ रहा होता, बिकॉज वो सेम नंबर रिपीट हो रहा होता. फिर दैट वुड सॉरी डिफरेंस 0 नहीं आ रहा होता, सेम नंबर रिपीट हो रहा होता है. सो दिस नॉट पॉसिबल. दूसरे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है r equals 1764 divided by 1680, and that's the ratio that you have. You can see if this can be simplified. 1764 divided by 1680, that's giving me 21/20, and that's the value of r that we're getting from this. Okay, once you have the value for r, इसको आप किसी भी equation में input कर दें to find the corresponding value for a. Let's put this in the first one and see what that gives us. इससे हमारे पास आ जाएगा a equals 1764 divided by 21/20 का whole squared. Put this whole thing on a calculator. इसमें आपको बहुत ज़्यादा manual कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा उठा के calculator में डाल दें. ठीक है, let's see what that gives us. 1764 divided by 21/20 का whole squared, and that's giving me 1600. a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है 1600. Once we have this, हम क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए था, 50th term चाहिए थी, term formula अप्लाई करें, a और r की values input कर दें, you'll get the 50th term. ठीक है, so what do you get from that? T50 a r raised to power n minus 1. A is 1600 into r, which is 21/20 raised to power r minus n minus 1. So that's 50 minus 1. Put this in your calculator and see what that gives you. 1600 into 21/20 whole raised to power 49. And that turns out to be 17474. उसने कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी हुई क्वेश्चन के अंदर राउंड ऑफ करने के लिए, नहीं दी हो. यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दिस एंड दैट्स परफेक्टली ओके. यू डोंट हैव टू राउंड दिस ऑफ. ओके, yes, it is छोड़ सकते हैं, that's okay. अच्छा, let's move on. Question number 5. Now this looks like transformations. Yeah, so it says the graph with equation y equals f of x is transformed to the graph with y equals g of x by a stretch in the x direction. Okay, stretch in the x direction, that means horizontal stretch. X coordinates multiply होंगे किससे, 0.5 से, right? Horizontal stretch है, x coordinate जो भी होंगे आपके वो 0.5 से multiply हो जाएंगे, because that's the scale factor, followed by translation of 0, 1. यानी कि vertically आपको क्या करना है, 1 unit upwards move करना है. So that's vertical translation. Now the diagram below shows the graph of y equals f of x. Yeah, so this is the graph of f of x. We need to sketch the graph of g of x. Now, how do you do that? Just apply these two transformations. Now, look at the important points that you have. आपके पास ये points हैं 1, 2, 3, 4, 5. You can think of each of these points and see कि अच्छे कैसे move कर रहे होंगे. X coordinates सबसे पहले क्या होगा, stretch होगा.
एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसको आपने 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखें जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, इट विल रिमेन एज इट इज, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इट विल रिमेन वेयर इट इज। सेकंड जो नंबर है, सेकंड जो पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ये कहाँ चला जाएगा, 0.5 पर चला जाएगा। सो बेसिकली आपका ग्राफ एक तरह से आप कह सकते हैं कंप्रेस हो रहा है, राइट, बिकॉज स्केल फैक्टर 0.5 है तो वो कंप्रेस हो रहा है ग्राफ, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, और फिर जो नीचे वाला पॉइंट जो 2 पे था, वेयर इज दैट गोइंग टू गो, 2 into 0.5 दैट्स गोइंग टू गो टू 1, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन this point here that's at 3 is going to go to 1.5, और फिर जो 4 वाला पॉइंट है वो चला जाएगा 2 के ऊपर। ये हमारी स्ट्रेच होगी सबसे पहले, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस नेसेसरली, आप ये पेंसिल से कर रहे होंगे, ठीक है। आप ये पेंसिल से अगर आप बनाना चाहें आप बना लें, जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा अभी स्ट्रेच के बाद दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, बट दिस इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट, ओके, दिस इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट। उसके बाद एक चीज और हो रही है, उसने कहा है followed by this translation 1 unit आपने up move करवाना है इसके बाद ग्राफ को, so every point on your graph is now going to move up by 1 unit, ठीक है। तो अब क्या होएगा, ये वाला पॉइंट नीचे जो 0.1 पे पॉइंट था वो 0.2 पे चला जाएगा, and similarly for every other point they're going to go 1 unit up, and your final graph is going to look something like this, which you're going to draw there. G of x is this thing, ठीक है। ये इंटरमीडिएट ग्राफ जो है आप यहाँ से erase कर देंगे, that is not going to be required, okay। ये आपने अपने लिए सब बनाया था, इसको आप वहां पे नहीं रहने दोगे, यहाँ पे erase कर दोगे, ठीक है। and that's your final answer here. Okay, so this is what g of x is supposed to be. All right. अच्छा, अब देखिए उसने क्या कहा, find an expression for g of x in terms of f of x. Now, how do we think about this? f of x आपका original graph था, वो कैसे transform हुआ है? Horizontal stretch with scale factor 0.5. Horizontal stretch, horizontal जब कुछ होता है तो क्या होता है, जो फंक्शन के अंदर वाला पार्ट होता है वो किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है, राइट। जो फंक्शन के अंदर वाला पार्ट होता है वो किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है, तो x को आपने मल्टीप्लाई करना है किसी चीज से, अब किससे करेंगे, रिमेंबर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस में थिंग्स वर्क काउंटर इंट्यूटिवली, राइट, उल्टा हो रहा होता है। सो 0.5 अगर स्केल फैक्टर है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसके रेसिप्रोकल से। 0.5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 over 0.5 एंड दैट इज 2, तो अंदर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। 0.5 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स 2x, ओके। एंड देन इट्स मूविंग अप बाय 1 यूनिट, दैट्स अ वर्टिकल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन में क्या होता है, फंक्शन के बाहर कुछ हो रहा होता है, तो फंक्शन के बाहर आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, 1 यूनिट ऊपर जाने का मतलब है 1 ऐड हो जाएगा, सो यू हैव +1 हियर outside the function, ठीक है। so what is g of x therefore going to be, g of x is equal to f of 2x plus 1, and that's the result that you get from this, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इनपुट लिखना था। let's move on, question number 6. the curve of an equation is this, express the equation in this form, square complete करना, you can do this, ये आप कर लेंगे, hence solve this equation, तो जो completed square form होगी उसको 45 से equate कर दें, राइट, और फिर आप स्क्वायर रूट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू दिस। क्वेश्चन नंबर 6 इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, पार्ट सी क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 शोइंग द कोऑर्डिनेट्स, ओके, आपने वो ग्राफ स्केच करना है। नाउ दैट ग्राफ is a quadratic function, right? For a quadratic function से ग्राफ कैसे होते हैं, या तो यू शेप्ड होते हैं या एन शेप्ड होते हैं, राइट। तो ये यू शेप्ड ग्राफ होएगा, टर्निंग पॉइंट आपने उसमें शो करना होगा। उसने कहा है कि आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट शो करने जरूरी नहीं है कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है,
टर्निंग पॉइंट आप शो कर देंगे और आप ग्राफ स्केच कर देंगे, ठीक है। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बी एबल टू डू इट। ये ओ लेवल्स है, ये तो आप कर सकते हैं, यू शुड बी एबल टू डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये देखते हैं। Okay, so now we have this identity. Proving identities is something that a lot of people find a bit confusing. Let's have a look at this. We have to prove this identity. Okay, on the left side we have this, on the right side we have this. Now how do we decide which side we start from? Normally क्या हो रहा होता है, हम left side से ही start कर रहे होते हैं, but what logically what we do is जो side ज़्यादा complex है उससे start करते हैं, right? Now how do you decide which side is more complex है? जिस side पे ज़्यादा functions आ रहे हैं, left side पे sin भी आ रहा है, cos भी आ रहा है, right पे सिर्फ tan है, और left side पे दो terms आ रही हैं, दो fractions आ रही हैं, right side पे सिर्फ एक fraction है, तो left से right पे जाना is going to be much simpler as compared to going the other way around. Okay, so left से right जा रहे होंगे. Now how do we do this? Let's try to think about this. आपके पास ये दो separate terms हैं, right side पे सिर्फ एक term है, so one starting point could be that you take LCM, right, ताकि वो जो multiple fractions है वो एक single fraction में convert हो जाए, and then we'll see what we can do after that. So let's start with this. अब देखें आइडेंटिटीज में अक्सर ये होता है आपको देख के डायरेक्टली नहीं पता चल रहा होता अच्छा इसमें क्या करना है. What you do is you start with something and then you try to think on the go कि अच्छा अब इसके बाद next कर सकते हैं, next कर सकते हैं. तो we'll start with this. हमने ये सोचा कि अच्छा दो टर्म्स आ रही हैं लेफ्ट साइड पे, इसको एक टर्म में करना है. So the logical starting point would be कि आप LCM ले लो इन दोनों fractions का. So that's what we do. In the denominator we would have these two expressions multiplied, sin theta plus cos theta into sin theta minus cos theta. All right. Now, what about the numerator? This thing gets multiplied with this, and this thing gets multiplied with this, and let's see what we get from that. Sin theta जो numerator में है, ये किससे multiply हो रहा होगा? Sin theta minus cos theta से. Plus cos theta into sin theta plus cos theta. All right. Okay, so now we've got this fraction. We can simplify this and see what that gives us. Numerator में we are getting sin square theta minus sin theta into cos theta plus sin theta into cos theta plus cos square theta. Okay, what about the new denominator? Denominator में हम अक्सर ये करते होते हैं कि इसको ना सिंप्लीफाई शुरू में नहीं करते, जस्ट टू सी कि कैंसिलेशन तो नहीं हो रही है. यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी बिकॉज न्यूमरेटर में देखें आपके पास क्या आ गया है, यू हैव माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया. तो अब न्यूमरेटर को आप फैक्टराइज तो कर नहीं सकते हो, तो कैंसिलेशन नहीं हो रही होगी, तो डिनोमिनेटर को भी हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हाउ डू यू सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर? आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या फिर अगर आप रिकग्नाइज कर लो कि दिस इज a plus b into a minus b, right? So that is going to become a square minus b square. So in the denominator you could have sine square theta, that's a square, minus b square, which is cos square theta. Okay, and now we've got something like this: sine square theta plus cos square theta divided by sin square theta minus cos square theta. Okay, now one idea could be कि हम ऊपर न्यूमरेटर में देखें sin square plus cos square क्या होता है, 1 होता है, तो उसको 1 लिख दें, राइट? 1 लिख देंगे तो हमारे पास नीचे क्या होएगा, नीचे हमारे पास आ रहा होएगा sin square theta minus cos square theta. But then think about how do we go from this form to this form now? जो हमें राइट साइड पे प्रूव करना है वो हम कैसे कर सकते हैं? tan में कन्वर्ट करना है, राइट? So we want this sin and cos to be converted to tan somehow. अब tan में कैसे convert करेंगे? Tan, sin और cos के दरम्यान में क्या connection होता है, क्या relationship होता है? We know that tan theta is identical to sin theta over cos theta, right? That's how they are related. तो हमें किसी तरह से sin over cos लेकर आना है कहीं पे ताकि हम उसको tan में convert कर सकें. Okay? Now, how can we do that? How can we do that? अब देखें न्यूमरेटर में अगर हम 1 कर देते हैं तो 1 को हम किस तरह tan में कन्वर्ट करें? It's going to be quite complicated, right?
सो न्यूमरेटर भी हम क्या करते हैं, फिर हम इसको ऐसा करते हैं, 1 में नहीं कन्वर्ट करते, हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। हम देखते हैं कि इसको कैसे फिर हम कॉस स्क्वायर उसमें टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि साइन और कॉस को तो टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 को कैसे करेंगे? इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? इवन दो इट्स करेक्ट टू राइट इट एज 1, बट उसका फायदा नहीं है, इट्स नॉट गेटिंग अस क्लोजर टू आवर फाइनल रिजल्ट। तो हम इसको 1 नहीं लिखेंगे फॉर दैट रीजन। ओके, तो अब क्या करें? How do you go from this step to what is required there? We have to use this identity somehow. Tan theta is identical to sin theta over cos theta. Now, you can use a trick here. If you look at this form that's given, think about it. अगर ये वाला sin square cos square से divide हो जाए, तो हमारे पास ये tan square आ जाएगा। Similarly, denominator वाला sin square ये भी अगर cos square से divide हो जाए, तो ये भी tan square आ जाएगा। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन द फॉर्म एज वेल। और ये जब cos स्क्वायर डिवाइड होएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो ये वाली फॉर्म भी आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू हियर इज वी कैन से लेट्स डिवाइड both the numerator and the denominator of this fraction by cos square theta. Now, let me write down what I mean here. In the numerator, we have sin square theta plus cos square theta. And in the denominator, we have sin square theta minus cos square theta. This is what the fraction is right now. क्योंकि हमें tan में जाना है, right? tan और sin और cos का ये रिलेशन होता है, हमें किसी तरह से sin over cos चाहिए। तो इस sin square को tan square में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं let's divide the whole expression by cos square. But क्या हम कर सकते हैं इस तरह से? ऐसे randomly किसी expression से divide तो नहीं कर सकते। But we can do it if we do the same thing with the denominator as well. जो हम ऑपरेशन न्यूमरेटर में अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला ऑपरेशन, अगर हम सेम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दें, then that is going to be okay, right? So हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। All right, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। It's just like this कि आपके पास अगर कुछ 2/3 लिखा हुआ है, you can write it as 2/5 over 3/5, right? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो सेम ही एक्सप्रेशन रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ये क्या बन गया, इससे आपको मिल गया tan स्क्वायर, और फिर ये cos स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर, that's going to give you 1, so you have tan square theta plus 1 in the numerator. What about the denominator? Sin square over cos square, यहाँ से आपको मिल गया tan square, and then cos square over cos square, that's 1, and you have minus in the middle, and you got exactly the form that was required there, right? आपके पास वाली फॉर्म आ गई है, tan square theta plus 1 divided by tan square theta minus 1. Okay, I hope that makes sense. Now this was kind of tricky, but that's how you could approach it. This is the same as the right hand side. Okay, अच्छा, now even if you are not able to figure this out, आप ये इस step तक तो आ ही सकते थे, उसके आपके 1-2 marks तो आपको मिल जाते हैं उसके, ठीक है? And you can still do the next question, so that's okay. It's not something to panic about. Okay, आप यहाँ पे 1-2 marks अगर lose करते भी हैं, आपने पूरा question नहीं छोड़ के आ जाना. You are still going to attempt the next part, and the next part is most likely going to be easier than the first part. Okay, so let's look at the next one now. अच्छा, उसने कहा है hence find the exact solutions of this equation. Now how is this connected to what we have done in the first part? देखें जो left side आ रही है, sin theta over sin theta plus cos theta plus this thing, this is the same as this. इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फ्रैक्शन के साथ. ओके, सो लेट्स डू दैट. इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दिस लेफ्ट हैंड साइड इज tan square theta plus 1 over tan square theta minus 1, and that equals 2. So आपकी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो सकती है, right? And this is something that you can solve then.
for theta between 0 and pi. Okay, इसको solve कर लें, cross multiply कर लें, denominator तो चला जाएगा. What do you get from that? You get tan square theta plus 1, that equals 2 tan square theta minus 2. If you take these terms to the other side, or in fact take tan square to the other side, constant to the side, what does that leave you with? You have tan square theta, that is equal to 2 plus 1, which is 3. Tan square theta equal to 3 आ गया. अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड्स के ऊपर, बट डोंट फॉरगेट व्हेनेवर वी टेक स्क्वायर रूट वी हैव टू पुट प्लस माइनस, राइट? सो ये tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज गोइंग टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. दैट इज व्हाट tan थीटा इज. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिक एंगल फिगर आउट कर लेंगे. लेट्स फिगर दैट आउट. tan alpha is equal to square root of 3. What's the value of alpha? Remember, you have to find exact solution. तो even if you don't remember these values, आप calculator से exact value देखेंगे. इसकी क्या होती है? Square root of 3 का आप inverse लेंगे. Remember, your calculator has to be in radian mode here. Okay, जब degrees का sign नहीं लगा हुआ, circle जो होता है, it's radians. Okay. अच्छा, तो क्या करें? अब हम इसका inverse लेते हैं. Tan inverse of square root of 3, that should give you pi over 3, I think. Yeah. So pi over 3 आप calculator पे करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, this is the basic angle that we have. Now we think of quadrants. कौन से quadrants में हो सकते हैं? Tan is both positive and negative. तो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. That means you can be in any of the 4 quadrants. However, उसने एक interval दिया हुआ है, उसने कहा 0 से pi तक, यानी pi से आगे नहीं जा सकते. That means the third and fourth quadrants are not allowed. तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपके पास क्या एंगल्स बनते हैं? फिर pi over 3 here and pi over 3 here in the second quadrant. So what do we get? Theta is either equal to pi over 3, that's the angle in the first quadrant, or theta is equal to the angle in the second quadrant, which is going to be pi minus pi over 3. And you can see what that turns out to be. This is going to be 2 pi over 3. So there are two possible values of theta that we get from this, pi over 3 or 2 pi over 3. Okay. All right. That was question number 7. Yeah. Let's move on. Question number 8. It says the equation of a curve is such that the derivative is this. The curve passes through the point 3, 5. Find the equation of the curve. That's not that difficult. Integrate karna hai, c ki value figure out kar leni hai. Second part is find the x coordinate of the stationary point. All you have to do is put this derivative equal to 0, right? Or उस equation को solve कर लें. ठीक है, that solving that equation is also not going to be that difficult because आपके पास ये इस तरह से कुछ आ जाएगा. Let's actually do the second part. उसका third भी है. Okay, उसका third part भी है. तो second और third कर लेते हैं. First part आसान है, right? Equation of curve find करनी है ना? You can do that. Integrate करना है, बस इसको plus c आएगा. C की value find करने के लिए 3, 5 point input करेंगे, c आ जाएगा. ठीक है? First part आप कर लेंगे. Second part देखते हैं. इसने x coordinate of stationary point निकालें. What's the derivative? dy over dx हमें दिया हुआ है. dy over dx is equal to 3x raised to power 1 over 2 minus 3x raised to power minus 1 over 2. Okay, ये equation हमें solve करनी है. इसको derivative को क्या करेंगे? 0 से equate कर देंगे. What do you get from that? 3x raised to power 1 over 2. This is negative power. You can take that to the denominator and it becomes 3 over x power 1 over 2. आप पूरे equation को x power 1 over 2 से multiply कर देंगे. आपके पास क्या आ जाएगा? 3 into x power 1 over 2 into x power 1 over 2. That gives you x. So you have 3x minus 3 equal to 0. All right. And that gives you x minus 1 equals 0. 3 से divide कर दिया. तो x आपके पास आ गया 1, sorry. X की value आपके पास आ गई 1. This is the x coordinate of the stationary point that you were looking for. ठीक हो गया? अच्छा. अब देखिए next part. This is important. The next part says state the values of x, the set of values of x, for which y increases as x increases. For which y increases as x increases. What does that mean? अगर आपका ग्राफ इसका जो भी होएगा, that's going to be like this. ऊपर की तरफ जा रहा होएगा, right? कोई भी उसकी shape कोई भी हो सकती है. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है. It could be anything, but left to right ऊपर की तरफ जा रहा होगा ग्राफ. तो इसका मतलब ये है आपका जो gradient है ना ग्राफ का, that is supposed to be positive. और gradient कहाँ से आ रहा होता है? Gradient is the derivative, right?
So dy over dx, that has to be greater than 0. Okay, तो डेरिवेटिव आपके पास है ऊपर, आपने सिंपली क्या करना है, उसको ग्रेटर देन 0 इनपुट कर देना है. ठीक है, 3x raised to power 1 over 2 minus 3 over x power 1 over 2 greater than 0. ठीक है, ये इक्वेशन तो आपने पहले भी सॉल्व किया है. इक्वेशन इनफैक्ट आपने पहले सॉल्व किया अभी ऊपर, उसमें x की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, 1 आ रही थी. तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते थे x greater than 1. But if you want to solve this again, क्या हो जाएगा, x power 1 over 2 से multiply करेंगे, and that's going to give you 3x minus 3 greater than 0. इसको solve करेंगे, you'll get x greater than 1. This is the set of values of x for which the gradient here is going to be positive. The derivative is positive. Okay, ये आपके पास आ गई x की value जो हमें चाहिए थी. Let's look at this one, question number 9. So now we have functions. It says f of x equals x plus 1 over x and g of x equals ax plus 1. दोनों की domains दी हुई हैं, x is greater than 0 for f of x and x is any real number for g of x. Now in the first part it says find an expression for gf of x. That means g of f of x. This is what we want to find out. तो function g के अंदर हमने क्या करना है, f input कर देना है. So it's g of x plus 1 over x. That's what you want to do. Okay. अब ये कैसे होएगा, फंक्शन g के अंदर जहां पे भी x आ रहा है, आपने क्या करना है, उस x की जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन डाल देना है. Let's do that. a into x plus 1 over x plus 1. And that is what you're looking for. इसको simplify कर सकते हैं या इसको as it is पे छोड़ सकते हैं. It's just one mark. You can leave it like this and that's okay. ठीक है, simplify भी करेंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे. It will remain as it is. In the second part it says given that gf of 2 equals 11, find the value of it. That means अगर आप इस gf of x फंक्शन जो ऊपर आपने लिखा है, इसके अंदर अगर आप x की जगह पे 2 डाल दोगे, जो रिजल्ट आएगा that should be equal to 11. So that's what we do here. We say इस फंक्शन में x की जगह पे 2 डाल दें. So we have a into 2 plus 1 over 2 plus 1. This whole thing should be equal to 11. That is what we're given. Now just solve this equation and see what that gives you, right? So what we have here is 2 plus 1 over 2, that is 5 over 2. So you have 5 over 2a. This 1 goes to the other side and becomes 10. 11 minus 1 becomes 10. The value of a therefore is going to be 20 over 5, which is 4. And that's what we were looking for. Okay, pretty straightforward. Now part C says, given that the graph of f of x has a minimum point when x equals 1, explain whether or not f has an inverse. Now, this is really important. Remember, inverse किन functions का होता है? Inverse होता है one-to-one functions का सिर्फ. Now, is this a one-to-one function? Let's try to think about this. The function is f of x equal to x plus 1 over x. This is what the function is. ठीक है, और उसने डोमेन दी हुई है, डोमेन इज x greater than 0. उसने कहा इसका मिनिमम पॉइंट है x equals 1 के ऊपर. तो आपकी डोमेन के अंदर एक पॉइंट आ रहा है जहां पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, राइट? x equals 1 में मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा फिर? 1 के आसपास अगर ये पॉइंट x equals 1 है, तो लेफ्ट साइड पे ऊपर को होगा, राइट पे भी ऊपर को होगा कुछ ग्राफ, राइट? हमें एग्जैक्ट शेप तो नहीं पता ऑफ कोर्स, लेकिन दोनों साइड का ग्राफ इससे ऊपर होना चाहिए, राइट? इसका मतलब ये है, it's not a one-to-one function because it fails the horizontal line test. You can draw a horizontal line here that passes through the graph at 2 points. So that's not a one-to-one function. Now all you have to write here is, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? You'll say f does not have an inverse. That's one thing that you're going to write. Does not have an inverse. Why? Because it's not a one-to-one function. That's all that you have to write. It's not a one-to-one function.
Now, why is this not a one-to-one function? This function के अंदर turning point आ जाता है, वो one-to-one नहीं होता, right? Because turning point के around पे वो horizontal line test fail कर जाता है. So this is not a one-to-one function. This is what you're going to write there, right? अपने words में something to the effect of this. Okay, one-to-one function नहीं है, लिखना जरूरी है, ये आप लिखते हैं ना, ठीक है? Let's move on. Now it says it's given instead. Okay, now this is really important. This question phrase that it uses, it is given instead. इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, इसने पिछले पार्ट्स में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, that is not relevant or valid anymore. Okay? तो यानी आप पिछले पार्ट्स में देखें, आपने यहाँ पे a की वैल्यू 4 निकाली थी. वो 4 वैल्यू कैसे निकाली थी? जब उसने ये कहा था कि this is true. Now a equals 4 is not relevant anymore. उसने कहा given instead. So whatever was given before is not relevant. Now the value for a is 5. Okay, this is what you have to use. It says find and simplify an expression for g inverse of f of x. Okay, Achha. Now what are the functions? Let me just write them down here. First of all, f of x function क्या था? X plus 1 over x. उनके domains भी लिखनी है साथ. X plus 1 over x, and the domain for this function was x greater than 0. Okay, and what about g of x? G of x function was ax plus 1. A की value हमें पता है, a की value 5 है, so that's 5x plus 1, and this function is valid for all real values of x. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? g का inverse निकालेंगे, right? g inverse of x निकाल लेना, तो पहले g inverse निकालना पड़ेगा. Let's figure that out first of all. g inverse of x. So what we do is we say let y equals g of x, and that gives us y equal to 5x plus 1, x equals y minus 1 over 5, and g inverse of x therefore turns out to be x minus 1 over 5. ये आपका g inverse आ गया. अब आपको क्या evaluate करना है? g inverse of f of x. All right, g inverse of f of x. Now how do you do this? g inverse के अंदर आपने क्या करना है? f of x input करना है. So using these brackets is really helpful. अब g inverse function क्या है? This is the function g inverse x minus 1 over 5. इस function में x की जगह पे you're going to input this thing. ठीक है? Let's do that. Numerator में हमारे पास क्या आ जाएगा? x plus 1 over x. This whole thing minus 1 divided by 5. Now you cannot leave it like this because the question statement says you have to simplify the expression as well. Okay, इसको simplify करना आप जरूरी होगा. Let's simplify this. We can take LCM in the numerator. इसको अगर हम brackets यहाँ पे remove भी कर दें, let's take LCM for this. X plus 1 over x minus 1. X अगर LCM ले लें, oops, why does this happen? Okay, x LCM ले लें numerator में, आपके पास क्या आता है? X squared plus 1 minus x whole divided by 5. And now what we can do is we can take this x to the denominator so that it becomes x squared minus x plus 1 divided by 5 times x. And that is what your g inverse of f of x turns out to be here. ठीक है? That's what we get. Okay. All right. Explain why the composite function fg cannot be formed. Now, this is the question that confuses almost everyone. Why the composite function fg cannot be formed? अच्छा, उसने आपको hint तो देती है. उसने आपसे पूछा नहीं है कि form हो सकता है, नहीं हो सकता. उसने बता दिया कि नहीं form हो सकता. Okay. Now you have to find some reasoning for that. Now, let's write down the two functions here. F of x क्या है? F of x is x plus 1 over x. इसकी domain देख लें क्या है? इसकी domain is x greater than 0. And g of x, this function is 5x plus 1. And the domain of this function is any real value of x.
ठीक है, फंक्शन कौन सा फॉर्म करना है? एफ जी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know which function is the inner function here. G is the inner function. Okay, G is the inner function. F is the outer function. F is the outer function. Now, what's the condition that we have for a composite function to be formed? Now, if you have done this logically, this is how it looks like. Yeah. So basically what happens is, so you can find the link for this video in the description below. आपको P1 का crash course मिलेगा, उसमें ना composite function वाली जो video है, so P1 का crash course का link आपका I think description में पहला ही link है playlist का. उसमें composite function वाली जो video है ना, उसके second half में, first half में तो composite function कैसे निकालते हैं वो तो काफी straightforward है, लेकिन फिर composite function की domain और range ये क्या चीज होती है, you can find that there. P1 के crash course में आप देखेंगे, आपको वो मिल जाएगी. ओके, composite function की वीडियो है, उसमें domain और range का ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. For now, if you don't want to get into a lot of detail, just memorize this. Okay, इसकी logic है of course, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. इन दोनों चीजों का आपस में कनेक्शन होता है. Range of inner function, inner function की जो output होती है वो आपने outer function के अंदर input करनी होती है. तो इन दोनों में एक कनेक्शन होता है कि range of inner function, which is the output of the inner function, and the domain of the outer function, which is the input of the outer function. इनके दरमियान में ये एक तरह से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. Now एग्जैक्ट वो कनेक्शन क्या होता है, ये ऊपर स्टेटमेंट जो आपको बॉक्स में नजर आ रही है. For a function f g of x to be formed, the whole range of the inner function, जो inner function की सारी possible outputs हैं, वो outer function की domain का part होनी चाहिए. यानी वो f जो है वो accept कर सकता होना चाहिए as an input, otherwise वो function break हो जाएगा, right? So for example, अगर मेरे पास एक function, in fact let's take this example जो हमारे पास question है यहाँ पे. Function f में देखें, function f is the outer function. Function f जो है क्या values ले सकता है? सिर्फ positive values, x greater than 0. Function f के अंदर आप सिर्फ positive value input कर सकते हैं. ठीक है, अब function g output क्या दे रहा है, इसकी range क्या है? इस function की जो range है, that is any real value. It's a straight line, right? Straight line है, अगर input कोई भी हो सकती है straight line में, तो output भी कुछ भी हो सकती है. इसकी जो range है, that is all real values. तो अब मसला क्या होएगा, function g output दे सकता है कोई भी number, negative, positive, 0, function g doesn't care. अब function g से जब output आएगी और वो function f में जाके input होएगी, मसला हो जाएगा, because function f तो सिर्फ positive value दे सकता है. तो जब भी g का negative output आएगा, वो function f में तो input नहीं कर सकता, and that's where the function is going to break. All right, so what we write here is, so this was just for understanding, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, the whole range of the inner function. What's the inner function? ये आपने सब connect करना है, contextualize करना है question के साथ. Inner function यहाँ पे g है. The whole range of g क्या है वो? All real values. The whole range of g is not part of the domain of the outer function f. Because of this reason, the composite function cannot be formed, right? Because g की कोई output ऐसी आ जाएगी जो negative होगी, वो function f में हम input नहीं कर सकेंगे, so that's not allowed. तो g की जो range होनी चाहिए थी, वो कोई positive values में कोई interval हो सकता था, negative value नहीं आ सकती थी. So that's where the problem is. Okay, so if you want to understand this with logic, have a look at that video, composite functions वाली P1 के playlist के अंदर. उसमें काफी डिटेल में explained है, you'll understand that. Okay, अच्छा, let's move on to question number 10. The diagram shows a cross section RASP of the body of an aircraft. Okay, the cross section consists of a sector OARB of a circle of radius 2.5 meters.
with center O, a sector PASB of another circle of radius 2.24 meters with center P and a quadrilateral OAPB. Angle AOB is 2 pi over 3 and the angle APB is 5 pi over 6. Okay, सारी information आपको diagram पे नजर आ रही है, ठीक है? Yeah, so this part is important. This part is important. Sector PASB जो है, ये एक और circle का part है. So this is important. ये part जो है, ये एक और circle से आ रहा है. उसका center क्या है? Center P. So this is one different sector. और ये जो ऊपर वाला है, this is a different sector. ठीक है, with center O. These are two separate sectors. Okay, ये same circle नहीं है. आपको diagram पे नजर भी आ रहा है. We need to find the perimeter of the cross section RASB. Okay, RASB. Where is R? अच्छा, R ऊपर है. RASB. इस पूरे के क्रॉस सेक्शन का आपने क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है. बेसिकली कौन सी लेंस की बात हो रही है? ये जो ग्रीन और येलो लेंस, राइट? जो आउटर पार्ट जो है, बाउंड्री जो है इस फंक्शन की, वो आपने देखना है, ठीक है? अच्छा, let's find this perimeter. That's just going to be the sum of these two arc lengths. Yes, let's say this live stream is going to be uploaded right after this, as in record भी हो रहा होता है साथ-साथ, तो आपके पास बाद में भी available होगी. अच्छा, find the perimeter of the cross section. ये आपने find करना है, arc lengths दोनों find करनी है. Let's do that. So perimeter is equal to arc AB plus the other arc AB. तो arc AB इस पे हम कर देते हैं सेंटर T वाले सेक्टर के साथ प्लस आर्क AB ऑफ द अदर सर्कल विद सेंटर O. ये दोनों जो आर्क्स हैं, इनको हमने ऐड करना है, ठीक है? ग्रीन एंड येलो आर्क्स जो आपको नजर आ रही है डायग्राम पे. नाउ हाउ डू यू डू दैट? आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस इनटू थीटा. प्लीज रिमेंबर, सर्कुलर मेजर के अंदर आपने एंगल्स रेडियंस में रखने हैं, ठीक है? डिग्रीज में नहीं कन्वर्ट करना इसको, ओके? बिकॉज ये जो फॉर्मूलाज हैं, S इक्वल्स आर थीटा और हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये सिर्फ रेडियंस के लिए वैलिड है, डिग्रीज के लिए नहीं वैलिड होते, ओके? रेडियंस में रहने देना सब कुछ. डू नॉट ट्राई टू कन्वर्ट थिंग्स इन डिग्रीज, दैट्स गोइंग टू कंफ्यूज यू, ओके? अच्छा, रेडियस इनटू एंगल. रेडियस क्या है? सेंटर P वाले का देख लें पहले, येलो वाले का. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट देम. ये येलो वाला है and this is the green one. Let's just input values. Radius of the yellow arc, that's 2.24. Into the angle is 5 pi over 6 plus arc AB, जो ऊपर वाली arc है, green वाली arc, radius उसका क्या है? 2.5. Into the angle is 2 pi over 3. But be careful, 2 pi over 3 कौन सा एंगल है? ये तो नीचे वाला एंगल है, ये जो ये वाला पार्ट था सर्कल का. आपको मेजर सेक्टर चाहिए, ऊपर वाला पार्ट, उसका एंगल क्या होगा? टोटल एंगल 2 पाई होता है सर्कल में. सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 2 pi minus 2 pi over 3, and that should give you 4 pi over 3. So the angle is actually 4 pi over 3. Okay, ऊपर वाला एंगल देखना है. So that's 4 pi over 3. You input that here. Now we have to give our answer correct to 2 decimal places. Exact नहीं चाहिए, तो पूरा कैलकुलेटर में डालें, देखना बस क्या आ जाता है. Okay, 2.24 into 5 pi divided by 6 plus 2.5 into 4 pi divided by 6, and that is giving me in terms of pi, it's 53. Let me just do that calculation again. (2.24 into 5 pi, मैंने से डाला, plus 2.5 into 4 pi divided by 3 करना था, मैंने 6 कर दिया. Okay, so that's 26 pi over 5. That's what I'm getting. लेकिन उसने कहा डेसिमल्स में, तो आपको ये डेसिमल्स में लिखना जरूरी होगा, अदरवाइज 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस को क्वेश्चन में लिखी होती है, उसको एज इट इज फॉलो करना होता है. This is going to be 16.336. That's what I'm getting. इसको 2 decimal places पे राउंड ऑफ करेंगे, ये बनेगा 16.34. If you write 16.336, you lose 1 mark.
If you write 16.33, you lose 1 mark. Second decimal place आपने round off करना है 3-4 होगा. ठीक है? अच्छा, let's move on. Part B. Find the difference in area of the two triangles AOB and APB, giving an answer connected to two decimal places. AOB and APB. AOB and APB. Okay, इनका difference निकालना है. आपके पास सारी लेंथ हैं, right? This is 2.5, radius है, तो दूसरी साइड पे 2.5 ही होगी. And this is also 2.24. तो half AB sin C वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं दोनों के ऊपर, उससे आपके पास एरियाज का डिफरेंस निकल आएगा. ठीक है, let's do that. Half AB sin C. हम पहले क्या कर रहे हैं? AOB का निकाल रहे हैं. Let me just write that here first of all. Area of triangle AOB minus the triangle APB. That's what I'm doing. Half AB sin C वाला फॉर्मूला यूज करें. Half into AB. दोनों साइड सेम है. 2.5 and 2.5 for the upper triangle. ये वाली triangle. Right? उनके दरमियान वाला एंगल भी गिवन है 2π/3. बस हम वो इनपुट कर लेते हैं इसके अंदर. हमारे पास आता है 2.5 into 2.5 into sine of 2π/3. Again, make sure your calculator is in radian mode. Minus APB, half into radius यहाँ पे क्या था? 2.24 and the angle is 5π/6. 2.24 into 2.24 into sine of 5π/6. आपने क्या करना है? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में डाल देना है और आपने देख लेना इससे क्या मिलता है आपको. ठीक है, 2 decimal places तक आंसर चाहिए यहाँ पे भी. Again, it's extremely important to follow the instruction as it is and write your answer to 2 decimal places. Let's do this. Half into 2.5 into 2.5 into sine 2π/3 minus half into 2.24 squared into sine 5π/6, and this should give you 1.45. That's the difference that you're getting for the areas of these two triangles. ठीक है? अच्छा, अब वो कहते हैं find the area of the cross section RASP, giving an answer correct to 1 decimal place. Okay, RASP जो area है ये आपने figure out करना है. RASP, yeah. So you want this complete area. ठीक है, ये पूरा एरिया चाहिए आपको. अब देखें, उसने ना एक आपकी हेल्प की है पिछले पार्ट में. उसने ना आपसे ये वाला पार्ट निकलवा लिया है, डिफरेंस था उन दोनों का. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छा क्या करना है. एंड दैट मेक्स दिस क्वेश्चन मच सिंपल एक्चुअली. ये पूरा एरिया निकालना है. ठीक है, अब पूरा एरिया कैसे आएगा? You have a major sector here, this part. Okay, this is one sector. You have another sector here in green. ये 2 सेक्टर्स के एरिया निकाल लें. मसला क्या होता है, दरम्यान में ये वाला एरिया बच जाता है. ओके, और ये उसने आपसे पिछले पार्ट में इसलिए निकलवा लिया, इसलिए अलग से फाइंड करवा लिया. ओके, तो आप वो सेक्टर्स का निकालेंगे एरिया, उसमें ये जो डिफरेंस था दोनों ट्राइंगल्स का वो ऐड कर देंगे एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट. ओके, सो लेट्स फाइंड द एरियाज ऑफ दीस टू सेक्टर्स. ऊपर वाले का एंगल कितना हमने फाइंड किया था? इट वाज 4π/3. अगेन यू जस्ट हैव टू इनपुट formulas, input values in the formula, and you get the result. And you see it was a pretty scary looking diagram, as Daniel pointed that out, but the question itself was not that difficult. बहुत जल्दी हो गया, इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, सिर्फ फॉर्मुलाज में वैल्यूज इनपुट करनी थी. तो देख के परेशान नहीं होता ना क्वेश्चन को कि पता नहीं क्या चीज आ गई है. The actual working was pretty straightforward, right? अच्छा, RASP एरिया निकाल लें. तो क्या आएगा? Area of sector, let me write that down here. Sector ASP, PASP, नीचे वाला sector, plus the sector OARB, ऊपर वाला sector, plus this difference that you found in the previous part, that's 1.45. ये इसमें ऐड हो रहा है. ठीक है, अच्छा, ये आपके पास एरिया आ जाएगा. अब फॉर्मूला लगा लें. हाफ r² थीटा, रेडियस क्या था नीचे वाले सेक्टर का? 2.24.
right, into iska square into angle, which is 5 pi over 6. 2.24 squared into 5 pi over 6. That's the area of the first sector. The other one, uska radius tha 2.5. And what about the angle? Make sure that you're using 4 pi over 3. The angle for the major sector, that's 4 pi over 3. Let's put that here. And this gives you this expression. Isko aap add, isko aap evaluate kar lein calculator, so you'll get the result. This answer has to be to 1 decimal place. ये evaluate करेंगे इसको 1 decimal place पर round off कर लेंगे. ठीक है. So half into 2.24 squared into 5 pi over 6 plus half into 2.5 squared into 4 pi over 3 plus 1.45. And that should give you 21.1 as the result. And that's your final answer. ठीक है. इसको आप step by step कर सकते हैं. That's going to make sure that you get more partial marks. अगर आपका आंसर सही नहीं आता, अगर आप इनको अलग अलग लिख देंगे पहले, तो उससे आपके पार्शियल मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे अगर आपका फाइनल आंसर गलत आ रहा है तो. ठीक है. अगर तो सही आ रहा है, you'll get full marks. ठीक है. अगर आप इसके आगे इवैल्यूएट अलग अलग करके नहीं भी लिखते, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपका फाइनल आंसर गलत है किसी केयरलेस एरर की वजह से, तो एक स्टेप यहाँ पे ऐड करना और माइट बी हेल्पफुल, जहाँ पे आप अलग अलग इवैल्यूएट करके कैलकुलेटर से वैल्यूज लिखते हैं, तो उससे आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स मिल जाएंगे फिर आउट ऑफ 3 अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो तो. ये वाला स्टेप दिखाना इन एनी केस इज इंपॉर्टेंट. इससे बगैर तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, लेट्स मूव ऑन. Question number 11. It says find the coordinates of the minimum point of this curve. That's just a quadratic function. इसका minimum point आप निकाल सकते हैं. So let's do this. Last question is कर लेते हैं. अच्छा, minimum point कैसे find करें? One idea is that you complete the square, but a lot of people find that more difficult, and that is more difficult compared to the other methods that you have. आप differentiation कर लें, या फिर आप x equals minus b over 2a वाला formula use कर लें. इसमें से कुछ कर लें, that's going to be better. Okay? या तो derivative निकाल के 0 से equate कर दें, या x equals minus b over 2a use कर लें. दोनों में से whatever you prefer. Minus b over 2a use करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? Minus into minus 12 divided by 2 into 9 over 4. 9 into 9 over 4, yeah. Let's evaluate this. 12 divided by 12 into 4 divided by 18. And that's giving me 8 over 3. X coordinate of the turning point is 8 over 3. Okay, what about the y coordinate? Let's figure that out. Function of input kar do. And that will give you the result. 9 over 4 into 8 over 3 whole squared minus 12 into 8 over 3 plus 18. And that is going to give you the result for y. ये देखें आपके पास क्या आता है, y की value. Okay, so y turns out to be 2 from this. So what are the coordinates of the turning point then? आपको ये show करने की जरूरत नहीं है कि ये minimum point है, because ये quadratic function है. Quadratic function में एक ही turning point होता है, तो वो minimum ही होगा इसके अंदर. Okay, तो ये prove करने की जरूरत नहीं है आपको. अगर उसने कहा होता prove करें कि minimum point ये है, फिर आपको कुछ करना होता. उसने कहा find the coordinates, तो coordinates आपने निकाल लिया, that's enough. Okay. अच्छा, what are the coordinates? They are 8 over 3 and 2, and that is what you're looking for. ये आपके पास minimum point की coordinates आ गए. अच्छा, by the way, just a side point, this is actually a pretty cool way of completing the square. कि आप x equals minus b over 2a से क्या करें, ये turning point निकाल लें. इसका otherwise ना square complete करना काफी complicated होता. आप क्या कर सकते थे? This is the form y equals ax square plus bx plus c. Completed square form अगर आपको याद है, a into x minus h whole squared plus k. All you have to do is, once you have this turning point, just input this turning point there. अगर आपको square complete करना होता तो ये turning point है, h and k, इसको बस वहाँ पे input कर दें. a की जगह पे क्या डालेंगे? 9 over 4. So it's going to be y equals 9 over 4 into x minus h. That's x minus 8 over 3 whole squared plus k, which is 2. ये आपकी completed square form है. Okay, तो कभी कभी जो complicated वाले
कंप्लीटेड स्क्वायर वाले क्वेश्चन, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, दे बिकम मच सिंपलर अगर आप ये -b/2a वाला यूज करके मेथड टर्निंग पॉइंट निकाल लें और फिर इस फॉर्म में बस डाल दें उसको, a into x minus h whole square plus k के अंदर h और k की जगह पर टर्निंग पॉइंट डाल दें and you get the completed square form. आपको वो सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता. Okay, anyway, that was just a side point. Let's get back to this. ये हमारे पास turning point आ गया. Let's look at part B of this. It says the diagram shows the curves with equations y equals 9/4x square minus 12x plus 18, and this other one, the curves intersect at the points 0, 18 and 4, 6. Okay, so उसने points आपको दिए हैं. उसने कहा है कि ये point जो है ये 18 है और 0, and the other point is 4 and 6. ठीक है. Acha. Now we need to find the area of the shaded region. Now, how do you do this? This is area between two curves. Area between two curves kaise nikalte hain? You find the area between the upper curve and the x-axis and the area between the lower curve and the x-axis. Unka difference find kar lete hain. Okay, so that's what we are going to do here. दोनों का अलग-अलग area find कर लें. From 0 to 4. These are the limits on the x-axis, right? और उनका difference निकाल लें. पहले upper curve का निकाल लेते हैं. How much space do we have? Okay. Upper curve का निकाल लें और उसमें से minus कर देंगे lower वाला. What's the area formula? The area formula looks like this. For the area between curve and x-axis, it's integral of y with respect to x with limits from a to b. X के limits डाल लें यहाँ पे, ठीक है? Keep that in mind. Acha, upper curve. So let's say this is the upper curve. In fact, this is the upper curve. It's not about saying that. It is. ये आपके पास upper curve है, and the lower one is this. ठीक है. Now let's do integration for both of them separately. देखते हैं हमारे पास क्या आता है. अच्छा. Integral of 9/4x square minus 12x plus 18 with respect to x. Limits are from 0 to 4. Now, how do you integrate this? 9/4 remains as it is. X की power में 1 add करेंगे, it becomes x cube over 3 minus 12x squared over 2 plus 18 times x. C यहाँ पे नहीं input करने की जरूरत because आपके पास limits है, limits आपने डालनी है, limits आप input करेंगे from 0 to 4. Okay, now before you input limits, it's better to simplify this a bit. ये आपके पास expression क्या बन जाएगी? 9/12, in fact 9 और ये 3 cancel हो जाएंगे, आपके पास आ रहा होगा 3/4. 3/4 x cube minus 6x squared plus 18x, and the limits are from 0 to 4. अच्छा, अब ये limits input करके दिखाना जरूरी है, otherwise आपको marks नहीं मिलेंगे. ठीक है, limits input करनी जरूरी है. Let's input 4 first of all. 4 input करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 3/4 into 4 cube minus 6 into 4 squared plus 18 into 4. अच्छा, दूसरे लिमिट 0 है, तो 0 वाले केस में आप अगर सारी टर्म 0 हो रही हैं, अगर सारी टर्म 0 हो रही हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं. आप कह सकते हैं माइनस बाकी टर्म 0 ही हो रही हैं. We don't have to write them down. And now you can write down the answer and that's okay. Limits input करने के बाद आप आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, let's see what this turns out to be. 16 into 3 minus 16 into 6 plus 18 into 4, and that is giving me 24. तो एक एरिया मेरे पास क्या आ गया? 24 आ गया. ठीक है. That's one thing that we were looking for. Let's write that down. Let's look at the other graph now. The other function. That is 18 minus 3/8. That thing. इसका एरिया निकाल लें. These are different colors, so it doesn't mix up. Integral of 18 minus 3/8 into x raised to power 5/2 with limit 0 to 4. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है. 18 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 18x minus 3/8 constant remains as it is. X की पावर में 1 ऐड किया. 5/2 plus 1, that is 7/2 divided by 7/2.
And now what we do is we input the limits from 0 to 4. Before that, we can simplify things a bit. And this would give us 18x minus, अगर यहाँ पे हम कुछ cancellation हो रही है तो वो देख लेते हैं. Cancellation नहीं हो रही. All we have to do is, yeah, ये 8 to 2 cancel हो सकते हैं. We have 4 left here. 4 into 7 is 28. So we have 3 over 28. 18x minus 3 over 28 into x raised to power 7 over 2. And now we have to input the limits 0 to 4 in this expression as well. Let's do that. Let's input 4. What does that give us? 18 into 4 minus 3 over 28 into 4 raised to power 7 over 2. Subtract from that the case when you input 0, क्योंकि हर term में x आ रहा है, वो सारी term 0 हो जाएंगी. Right, and you'll get the result. ठीक है, let's do this. 18 into 4 minus 3 divided by 28 into 4 raised to power 3.5. And that is giving me 408 over 7. Now let's hope we haven't done any careless error here. 24 and 408 over 7. दूसरा वाला lower वाला area कितना आ रहा है? Let's evaluate this decimals में. This is 58. Lower curve के नीचे तो अच्छा ठीक है, मैं उल्टा लिख दिया. I'm sorry about that. मैंने उल्टा लिख दिया. So that's okay then. मैंने उल्टा ये लिख दिया है कि मैंने upper curve की जगह पे ये डाल दिया. So this is actually lower curve. Okay. So area मेरा ये वाला ज़्यादा आ रहा है ना, दूसरा वाला. So that sort of tells me कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था. मैंने upper की जगह lower लिख दिया था. मैंने ये वाली curve यहाँ पे डाली थी, लेकिन मैंने उधर lower लिख दिया था. So that was actually the upper curve. Okay. But at the end it doesn't matter. जो भी बड़ा number होगा ना उसमें साथ में छोटा minus कर देना. But अगर आपको गलत आ रहा हो तो that should kind of make you think कि कोई आपने error तो नहीं किया. तो यहाँ पे turns out hopefully we haven't done any error, बस ये upper और lower उल्टा लिख दिया था गलती से. Otherwise it's okay. अच्छा, subtract कर लें. Shaded area आ जाएगा आपके पास. Shaded area, that is 408 over 7 minus 24. You can see what that turns out to be. उसने question में instruction दी हुई है कोई. उसने कहा find the area of the shaded region. It's not given कि आपको कोई decimal places चाहिए, fraction चाहिए. So it's your choice, however you want to give it. 408 over 7 minus 24, and that's giving me 240 over 7. And that's your final answer. You can leave it like this, or if you want to write this in fraction, write this in decimal form, that's also fine. That turns out to be 34.286. You can say 34.29. 3 significant figures से ज़्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं लिख सकते. अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हुआ तो 3 significant figures से ज़्यादा लिखते हैं, कम नहीं लिखना. ठीक है? अच्छा, let's look at the last part now. A point P is moving along the curve in such a way that the x coordinate of P is increasing at a constant rate of 2 units per second. X coordinate is increasing at a constant rate of 2 units per second. That means dx over dt, that is equal to 2. Now, before you actually do this, just a reminder, you'll find a lot of other helpful content in the description below as well. आपको especially इस time पे ये quick revision videos का जो link है नीचे, उसकी पूरी playlist, that should be really helpful. There's a 23-minute checklist there that should help you identify कि आपने सारे concepts cover कर लिए हैं कि नहीं किए. उसके साथ साथ हर topic की एक quick revision video है. अगर कोई specific topic है जो आपने revise करना, you can have a look at that. That should be extremely helpful at this point. And there are detailed recordings for the whole paper 1 as well. वो crash course recordings के साथ link आ रहा है. उसमें आपको अगर कोई भी specific concept जरा detail में देखना दोबारा से, for example, domain and range of composite functions अगर आपको देखना है, या कोई भी और concept function transformations में भी अगर आपको देखना है, कोई भी concept जो आपको तंग कर रहा है, detail में जरा थोड़ा सा आपने देखना है, तो you can also have a look at that playlist. उसमें आपको वो titles उसके properly labeled है. You can have a look at that as well. Okay, chale, let's do this. Dx over dt, ये आपको given है, dx over dt is equal to 2. Find the rate at which the y coordinate of P is changing when x equals 4. तो हमें क्या करना है? dy over dt find करना है when x equals 4.
Okay, now what's the function? The function is y equals 18 minus 3 over 8 into x raised to power 5 over 2. Now remember, x की value 4 आपने यहाँ पे नहीं input कर देनी. You first have to differentiate it, find the derivative of this, and then put that value of x. इससे पहले नहीं input करनी, ठीक है? Let's differentiate it first of all. dy over dx. 18 का derivative is 0. What about this? Minus 3 over 8 remains as it is. Into the power is 5 over 2. X की power 5 over 2, उसमें से 1 minus कर दें. That's 3 over 2. That's the derivative. Now you can input the value of x here. The value of x is 4. Let's input that here and see what that gives us. dy over dx turns out to be minus 3 over 8, or you can say minus 3 into 5 is 15. 8 into 2 is 16. So we have minus 15 over 16 into 4 raised to power 3 over 2. Put this in your calculator and see what that gives you. I think it's going to be minus 7.5, right? Because here which I got 8 over 16 is 1 over 2, and that's minus 7.5. This is dy over dx. And now what were we looking for? We were looking for dy over dt. So we can use chain rule, right? Chain rule kaise use karenge? dy over dt find karna hai. You'll have two fractions. First fraction ka numerator ye hoga, dy. Second fraction ka denominator ye hoga, dt. And then in the remaining two places, you have the third variable. Third variable यहाँ पे क्या है? dx. वो यहाँ पे डाल देंगे. You just have to input values in this now. Yeah, as it is input कर सकते हैं. dy over dx is minus 7.5. And dx over dt is 2. So what does that give you? That gives you minus 15. And that is the rate of change of the y coordinate when x equals 4. Okay, so that's what we get here. That's what we were looking for. And that's it. That completes our paper. Now I'm going to start right away the next one as well, paper 1-1. Take it, that's the last one. And then we'll be done with all the papers from March 2021 to March 2023. अगर आपको किसी भी पेपर से कोई भी क्वेश्चन देखना है, आपको yearly past papers वाली playlist के अंदर वो सारे papers solved मिल जाएंगे. You can have a look at that if you want. And I'll see you in the next video. If you're going to sleep, that's okay. All the best for your exam. If not, I'll see you in the next stream that I'm starting just in about 5 minutes. Okay, Allah Hafiz.